अस्सलामुअलैकुम। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 की टेस्ट डिस्कशन है। टोटल मार्क्स 50 थे, 90 मिनट्स एलोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसका आंसर होना चाहिए था बिजनेस एंटिटीज की टाइप्स कितनी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, और की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कितने थे, 8 to 10। हर एक फीचर का 0.5 नंबर था। पार्ट 2 इसका है, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक पॉइंट का 0.5 नंबर। अब पार्ट सी है, उसमें वो पूछता है आइडेंटिफाई ऑल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and briefly describe the information needs of any 3 of them। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई यूजर्स थे, उनको आइडेंटिफाई करना था और उनमें से किसी 3 को डिफाइन करना। इसका सोल्यूशन आएगा सजेस्टेड। ये इसके यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओनर्स है, लैंडर्स है, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, मैनेजर्स। हर एक पॉइंट का 0.5 नंबर था। अब इनमें से किसी 3 को आपने डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे है ओनर्स। Owners require information to assess risk and ability of the business to earn profit and to pay dividends. They need to decide whether to buy, hold or sell shares. इसी तरह lenders के बारे में लिखना था, suppliers के बारे में लिखना था, हर एक पॉइंट का एक लिखना था। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में कहता है briefly describe the elements of financial statements with example। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करना था और साथ में उसकी एक एग्जांपल दी थी। एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 होते हैं, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इक्विटी है, इनकम है और एक्सपेंसेस है। अब एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एनी वैल्यूएबल थिंग ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एन एसेट। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। एग्जांपल में आ जाएगा प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेंटरी, कैश एंड वैल्यू। इसी तरह लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अ पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी पास्ट इवेंट। Liabilities are classified into non-current and current liabilities. Examples include loan, trade payables, expenses payable, etc. Equity is defined as equity is the residual interest in the business that belongs to the owner after deducting liabilities from the assets. Examples हैं उसमें initial investment, additional investment and retained profits. Income consists of revenue from the sale of goods or services, other items of income. For example, interest, rent, gain from disposal of non-current asset. The expenses is defined as expenses consist of expenses arising in the ordinary course of activities in running a business. Example include losses from disposal of non-current assets and losses arising from disaster. इस क्वेश्चन में डेफिनेशन का 0.5 मार्क था और एग्जाम्पल का 0.5 मार्क। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई थी। मैचिंग कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड अदर इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन द इनकम अर्न्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश। 1 नंबर इस पॉइंट का था और दूसरा पॉइंट था मैचिंग कंसेप्ट में, द कॉस्ट ऑफ सेल एंड अदर एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज इन द पीरियड टू व्हिच दे रिलेट, नॉट द पीरियड इन व्हिच दे आर पेड फॉर। इस पॉइंट का भी 1 नंबर था। अब पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें वो कहता है लिस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की 5 एग्जांपल्स मेंशन करनी थी। हर एग्जांपल का 0.5 मार्क। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स में आती है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की परचेज एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। सेकंड एग्जांपल है इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू इक्विपमेंट। Third one are improvements and additions to existing non-current assets, for example, building extension, installation of air conditioning, etc. Fourth one are to pay fee associated with raising long-term finance. Revenue expenditure examples में है purchase of goods meant for resale in the normal course of business, purchase of raw materials and components used to manufacture goods for resale in the normal course of business, expenditure made to meet the day-to-day running cost of a business, for example, rent, energy, wages, etc. Expenditure made to repair non-current assets, expenditure made to distribute goods to customers.
अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है स्टेट विद रीजंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस whether they are to be considered as capital and revenue expenditure। ये सिनेरियो ये थे, इसमें आपने बताना था विद रीजनिंग कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब पहला है इसमें वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अमाउंटिंग टू ₹6,000 एंड कॉस्ट ऑफ कैरिज फॉर द सेम अमाउंटिंग टू ₹15,000। इसका सजेस्टेड आंसर है as both of the costs are incurred to bring the asset into present condition and location, therefore both costs are capitalized। क्योंकि ये दोनों कॉस्ट जो है कैपिटलाइज होंगी क्योंकि ये एसेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए इनकट की जा रही है। इसमें रीजनिंग का एक पॉइंट है और आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट है। अब सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम ओल्ड फैक्ट्री टू द न्यू वन अमाउंटिंग टू ₹1,800। इसमें कहता है द कॉस्ट इज अ रेवेन्यू कॉस्ट बिकॉज इट डज नॉट मीट द recognition criteria for this। थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ न्यू टायर्स ऑफ ₹1,500 फॉर एन ओल्ड कार। एक ओल्ड कार के लिए न्यू टायर परचेज किया है, ये बताएं रेवेन्यू है कि कैपिटल है। इसका आंसर है एज परचेज ऑफ न्यू टायर्स विल इंक्रीज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ वन है a sum of ₹8,600 spent on a machine, ₹1,600 for replacement of worn out parts and ₹7,000 for addition of new devices which enable the output to be doubled। इसके आंसर में आएगा as both costs will increase the future economic benefit and cost can be measured reliably, therefore it is a capital expenditure। A fifth point that expenses incurred for whitewashing the factory building amount is ₹40,000। इसका आंसर था the cost is revenue cost because it does not meet the recognition criteria for this। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। सो कहता है नेम द अकाउंटिंग concepts on which the following rules are based। पहले सिनेरियो था nothing material is left out that would be vital to the investor or other users in assessing the underlying events and condition of the business। ये था completeness का concept। सेकंड वन में कहता है the future existence of company is uncertain। इसका आंसर था going concern, इसका 1 मार्क था। अब थर्ड वन में जाते हैं, उसमें कहता है during the year company purchased stationery worth ₹30,000। The amount has been charged to office supplies consumed, however major portion of the stationery was consumed after the year end। ये कंसेप्ट था मटेरियलिटी का, एक्रूअल का। अब फोर्थ वन है ओवरस्टेटिंग एसेट्स इनकम एंड अंडरस्टेटिंग लायबिलिटीज एक्सपेंसेस आर अवॉइडेड। ये कंसेप्ट था प्रूडेंस का। फिफ्थ वन है फिक्स्ड एसेट आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कंसेप्ट था हिस्टोरिकल कॉस्ट था। सिक्स वन है अ कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका आंसर था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लिख सकते, दोनों ठीक थे। सेवंथ वन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट ओनली रिप्रेजेंट रेलेवेंट फिनोमेना बट इट मस्ट आल्सो बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। ये कंसेप्ट था फेथफुल रिप्रेजेंटेशन टू एंड फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है explain the meaning of the following accounting term and give one example of each। पहला ये पार्ट है prudence। prudence में वो कहता है prudence is the inclusion of degree of caution while exercising judgment। Simply prudence means assets and income should not be overstated and liabilities and expenses should not be understood। इसकी एग्जांपल आएगी creation of provision for doubtful debts by exercising judgment so that assets should not be overstated। अब सेकंड पार्ट था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that the business will continue in operation for the foreseeable future। It means there is neither intention nor necessity to wind up the business in the next 12 months from the statement of financial position date। एग्जाम्पल में गोइंग कंसर्न की आएगा possible losses from closure of business will not be anticipated in the accounts। अब थर्ड वन था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट
Information regarding transactions and other events should be presented in such a way so that it represents their substances and economic reality and not merely their legal form. Example, the company A is essentially an agent of company B and so should only record a sale on behalf of company B in the amount of related commission. However, company A wants its sale to appear larger, so it records the entire amount for a sale as a revenue. अब इस क्वेश्चन में डेफिनेशन का 1 मार्क था और एग्जाम्पल का 1 मार्क।